हेलो स्टूडेंट्स समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ गुड इवनिंग होप समस्त को पढ़ापढ़ी बहुत ही अमेजिंग चलती हो आपण सक्सेस को आहुरी 100 टाइम्स बेटर करिया पई आमे आपण पई नै कि आसु 1000 क्वेश्चंस एंड आंसर सीरीज बेसिकली हमर प्लान है अछि जे एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स रो आमे अराउंड 20 क्वेश्चंस डिस्कस करबा एंड अराउंड 20 क्वेश्चंस आपण प्रैक्टिस करि परिबे आपण को ए जो पीडीएफ अछि क्लास रो सेटा रेगुलरली क्लास पर टेलीग्राम चैनल रे अपग्रेड हो जाउथिबो तो हमर जो प्लानिंग अछि ना आपण जहां भी पढुचंती वंस आपण क्वेश्चंस करचंती आपण को टिके कॉन्फिडेंस आसीबो आपण क्वेश्चन जहां आसुची जेमती एग्जाम रे पचारा जाउची आपण सेही हिसाब रे निजे चिंता करि परिबे रिलेट करि परिबे एंड जो सरप्राइज एलिमेंट रहउची एग्जाम को गले जे ए क्वेश्चन तो आमे केबे भाबिनु एटा एक्सपेक्टेड नथिला किबा एटा टिके डिफिकल्टी आडू को आमे फेस करछु हमको करिवारे प्रॉब्लम होची सो दैट शुड नॉट हैपन आमे जानिछु कंपटीशन टफ ही चलची एंड हम पाके टाइम बहुत कम अछि तो वी शुड नॉट वी शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम जस्ट ऑन रीडिंग एंड रीडिंग आमे प्रॉपर नोट्स भी करिबा नोट्स को रिवाइज भी करिबा एंड आमे प्रिपरेशन को आउट के एक्स्ट्रा लेवल जाय नै कि ट्राई करिबा कि क्वेश्चंस ऐड करिबा मोर एंड मोर क्वेश्चंस जते शीघ्र आमे बेसिकली हमर फोकस होची दीटा जिंस फ्रेंड्स वन आमे गोटे क्वेश्चंस को शीघ्र रीड करि परिबा सेकंड क्वेश्चंस रो जो डिटेलिंग था ना जेमति कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स आमे जेतरो हड़बड़ी रे पढुछु तो आमे से सब पार्ट्स मिस कर दो तो आज रे लेक्चर स्टार्ट करिवा आगुरु मु गोटे एडवाइस किंबा गोटे रूल आपण मानि कि चलतु जेतेबेले आपण क्वेश्चन पढुचंती एंड केबे केबे सेठी गोटे एम्प्टी वर्ड अछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू तो आपण से नॉट को एवरी टाइम अंडरलाइन कर दियंतु एंड देन निजर क्वेश्चन को फर्दर कंटिन्यू करंतु अदरवाइज कोन होची हड़बड़ी रे आपण सेटा भूल करिवे अलोंग विथ दैट आ गोटे जिंसो कोन जा मु आपण को एडवाइस करिया चाहिबी वंस यू लाइक अपीयर फॉर एग्जाम्स सेटा होची किछि किछि क्वेश्चंस आपण को टिके डिफिकल्ट लागी पारे तो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दैट जस्ट पुट अ सिंबल लाइक ए क्वेश्चन को आउथरे विजिट करियर अछि एंड वंस आपण को पेपर आपण कंप्लीट करूचंती पेपर आपण सारूचंती देन आपण आसी कि क्वेश्चन को पुनी आउथरे रीअटेम्प्ट करंतु मोस्ट इंपोर्टेंट होची वन टाइम रे पेपर आपण पढी कि सारिबे दैट इज नॉट पॉसिबल आपण को एटलीस्ट फर्स्ट टाइम आपण पेपर कंप्लीट करले 25 टा क्वेश्चन इट्स कंप्लीटली फाइन नेक्स्ट टाइम आपण अटेम्प्ट करचंती आपण नेक्स्ट पांचटा को गेस करिकि भी करि परचंती बट एई जो पांचटा क्वेश्चन आपण गेस करले एई क्वेश्चंस को आपण स्टार्टिंग रे पुट ऑन करिकि निजो टाइम वेस्ट करि परिबे नाही मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टाइम हियर एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होची फ्रेंड्स आपण सपोज एबे हमकु केबे केबे लेजीनेस आसे हमकु लागी कि हमकु प्रॉपर माने आमे सती टेस्ट सीरीज धरि कि बसी कि करूनी सर्कलिंग जेमति कि एमसीक्यू पे चारटा सर्कल थाए आमे यूजुअली कोन करू ना टेस्ट सीरीज धरू एंड से टेक्स्ट बुक रे ही टिक मारी मारी कि आमे कंटिन्यू करि दो बट प्रॉब्लम कोन होची फ्रेंड्स जेतेले आपण 100 टा क्वेश्चन रो टेस्ट दोचंती एमसीक्यू दोचंती आपण जदी आज ही जाय कि गोटे जिंस ट्राई करिवे सपोज दिस इज एन एमसीक्यू शीट जोथरे चारटा चारटा अछि एंड आपण को ये शीट रो प्रतिटी सर्कल को फिल करिया पई माने 100 टा क्वेश्चन रो केवल करेक्ट ऑप्शन फिल करिया पई 16 रो 17 मिनिट लाग जिवो रिमेंबर दिस तो आपण को पाखे क्वेश्चन को पढिया पई सपोज आपण को 2 आवर्स रो एग्जाम होची तो यू विल हैव अराउंड 100 मिनिट्स एंड 100 क्वेश्चंस तो एमती ही आपण जो भी एग्जाम दोचंती तादरु सेही टाइम को काढी दियंतु जति कि आपण सर्कल करिवे एंड सेति की टाइम फ्रेम भितरे निजो माइंड को प्रिपेयर करिवे जे एही क्वेश्चन तक मु पढी कि सारीबी माइंड रे से स्पीड एंड माइंड रे से जो इंपोर्टेंट वर्ड्स कैचिंग पॉइंट जदि हम एटा डेवलप कर दोजु तो डेफिनेटली आपण 3 रु 4 क्वेश्चन जोटा आपण सिली मिस्टेक करथांते यू वोंट बी डूइंग दैट फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग इज दैट वंस आपण कंप्लीट करी कि आउथरे आछंती ए पांचटा भितरु जदि दीटा भी ठीक हे जाउची तो हम हमें एटलीस्ट गोटे एडवांटेज पॉइंट रे अछु सो विथ दीस थिंग्स फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर आज बेसिकली हमें यूनिवर्स एंड इवोल्यूशन विषय टिके डिस्कशन करबा आज डिस्कशन रे बेसिकली हमरो फोकस रहइबो टिके स्टार्स के विषय रे एंड सम इंपोर्टेंट थिंग्स लाइक प्लैनेट्स जेमति कि हमें यूजुअली जानचो हमर चारटा प्लैनेट एंड
देन जो हमर एस्ट्रॉइड बेल्ट आछी एंड देन तापर जो बाकी चारटा प्लैनेट आछंती तांको बिहेवियर तांको नेचर रे गोटे वास्ट डिफरेंस हे जाउची माने सपोज दिस इज आवर सन देन these are our four planets this is our asteroid belt and apart from that we have our four gaseous planets जो माने हमर larger planets आछंती so always remember when you are studying these four planets and these four planets remember there are 2 to 3 special points of each of these planets. Why? Because one planet may be the brightest planet, one planet may have the shortest path of revolving around the sun, one planet may be red planet. Like मुझे सब जिनसे डिस्कस करी आमे क्वेश्चन मीडियम रे डिस्कस करिवा बट जेतोले आपण नोट्स बनौचंती ना सपोज एमती कि आमे जुपिटर जानछु जुपिटर रे आपण चारटा पांचटा पॉइंट लिखिले सो मोस्ट जोटा कि लार्जेस्ट इंपोर्टेंट मून अछि मून विषय लिखिले सिमिलरली जेमती कि आपण सैटर्न विषय पढ़ले सैटर्न रो जो रिंग्स अछि रिंग्स विषय आपण टिके पढ़ले कि काहे कि रिंग्स अछि एस्ट्रॉइड बेल्ट अछि मझरे तबे एंड रे कुइपर बेल्ट अछि तो वंस आपण पढुचंती तो आपण को नोट रे जहार जहार स्पेशल पॉइंट्स अछि ना ताकू क्लियरली मेंशन करंतु अपार्ट फ्रॉम दैट आउ गोटे जिंस मु कहिया चाहिबी ऑलमोस्ट जेमती प्रति सब्जेक्ट अछि जेमती कि पॉलिटी रे आपण देखिया पाइबे जे गोटे नेशन माने गोटे कंट्री कंट्री भितर स्टेट स्टेट्स भितर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट भितर एमती लास्ट रे गोटे इंडिविजुअल पर्सन किबा हाउस आछी सिमिलरली ज्योग्राफी रे भी कोन होची हमें जब देखिबा बेसिक मूवमेंट प्लैनेट लिखुची प्लैनेट टू छोटो होची सैटेलाइट सैटेलाइट टू स्मॉल होची हमर एस्ट्रॉइड्स एमती कंटिन्यू हे कि जाउथिबो सिमिलरली प्लैनेट्स प्लैनेट्स माने मिसथिबे प्लैनेट्स व्हेन प्लैनेट इज गेटिंग एडेड अप विथ द सन किबा जो स्टार जहार से माने प्लैनेट सेटा गोटे सोलर सिस्टम हबो एमती सोलर सिस्टम माने मिसी कि धीरे धीरे कंटिन्यू करी करी कि यूनिवर्स देन बहुत गुडा यूनिवर्स मिसी कि आ गोटे लार्जर स्ट्रक्चर फॉर्म करिवो जोडो को हमें मेटावर्स कहउचु सो दीस थिंग्स माने गोटे आपण को माइंड रे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म हबा दरकार जे सबुटु छोटो हमें को पॉइंट जाय पळोचु हां दिस पार्ट you should not go beyond like atoms molecules electron photon वो सब नहीं that is part of chemistry and physics but here when we are describing things on celestial aspect we need things to be like asteroid belts then किछि छोटो छोटो stones जे आपण जाय परचंती we are completely fine with that hope आजिरो सक्सेस मंत्र रो फर्स्ट डेटा स्टेप्स को आपण इंप्लीमेंट करंतु एंड आई होप आपण को बेटर रिजल्ट्स मिलिबो सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्वेश्चन सेशन हमर फर्स्ट क्वेश्चन होची मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट सीन बाय हमें समझते सुनिचु मिल्की वे गैलेक्सी विषय एवरीबॉडी नोस दैट बट लुक एट दिस क्वेश्चन द आंसर इज गैलीलियो बट लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट इन एग्जाम समझ जानछु मिल्की वे गैलेक्सी समझते गैलीलियो को विषय भी जानछथि बट वी डू नॉट नो दैट गैलीलियो इज एसोसिएटेड विथ मिल्की वे गैलेक्सी राइट so this is one of my favorite questions here we have a brief explanation to it according to big bang theory next lecture रे हमें टिके टिके in short जिंस भी ऐड करिवा like before starting the lectures आज हमें टिके explanations भी देख दवा cosmic substances formed in single dense mass which got scattered through explosion our milky way is galaxy discovered by galileo in 1610 तो एटी important word होची one is galileo and one is 1610 who found the word geography like हमें समय से every time जानिचो it is very simple option number B and important keyword is 276 Eratosthenes was a Greek mathematician geographer astronomer and poet he was born in 276 and propounded the word geography and 8 mu कहया भी geo means earth and graphy so friends geography is composed of two words geo and graphy geo means earth graphy means study we all know that it's very simple graphy generally आपण जोठी भी देखिबे that is associated with study of that thing which of the following scientists proved the path of the each planet elliptical clearly हमें कौन जानथुल suppose this is our sun and this our are the path हम every time भाबो कि this is a circular system but this is not actually like this how it actually is like this ए concept हम पे बहुत important जे once the things are elliptical एलिप्टिकल रो इंपोर्टेंस कोन ना देखंतु गोटे टाइम रे हमर अर्थ सन रो बहुत पाखे रे थिबो नियरर एंड गोटे टाइम रे अर्थ सन टू बहुत दूर रे थिबो फारदर राइट
The same happens with all the planets, but the most significant for us is always Earth. तो जेतेबेले Earth nearer थिबो ना, we will always use the word P for पाखरे, फेरिलियन, पेरिलियन आपण निज हिसाब रे कहि परिवे. And similarly when it is apart, दूर रे अछि, apart अछि, away अछि, सेठी आपण a use कर परिवे, that is known as aphelion. We will discuss this, but when elliptical word aschi, remember it is like this. This type of path is known as elliptical path. Hope this is clear. The answer is Kepler here, and Kepler started the ratio of squares of the period of any of the two planets is equal to. This is important here. The ratio of square of period of any two planet is equal to the ratio of cubes of their average distance from the sun. Right? Comets move around. This is also an important question. Look at here. It is a very simple question, but once you look at the options like Earth, Venus, Sun, and Jupiter, right? Suppose friends, आपनको जेमती question number 4 type ର question देखा जाउची, and for some reason you do not know the answer, there is always a way known as elimination. Elimination माने आमे ए suppose question number 4 रे चलंतु गोटे approach नबा that we do not know this question. I understand this is an easier question, but let's have an other approach, because sometimes exam re we need to eliminate things. We need to apply the all other means apart from knowledge to get that question done, right? आमे इट देखिबा अर्थ अछि, वेनस अछि, जुपिटर अछि, तीनटा जगह प्लैनेट अछंती. There is no such massive difference कि गोटे, and आमे basically कोन जानछु कि अर्थ चारिपटे खाली मून अछि. एंड जुपिटर एमिति भी किछि स्पेशल फीचर नाही जे ता चारिपटे किछि कॉमेट टाइप रे जिंस मूव करथिबो. प्रोबेबली हमर प्लैनेट्स गुडा कटि जिवो, एंड हमें गेस करिया को ट्राई करिबा. द आंसर इज सन, राइट? So the answer is actually sun, but we need to think like this and eliminate things. So comets are produced in the cloud situated on the periphery of the solar system. They are made up of gas, water vapor, and dust particles. So this is also important. One question sei pare, what are comets made of, right? Which of the following is not related to solar system? Solar system. And इटी हमें नॉट को हाईलाइट करथिबा, because हड़बड़ी रे हमें नॉट वर्ड छाडी दे पर. स्मॉलर प्लैनेट्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, नेबुला. देखो स्मॉलर प्लैनेट सोलर सिस्टम रे प्लैनेट्स अछंती. बेसिकली लेक्चर स्टार्टिंग आगरो आमे गोटे डिस्कशन करथुलु जे आमे जतले डिवाइड करूछु प्लैनेट, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मेट्रॉइड, डस्ट पार्टिकल्स, अप टू दैट एक्यूरेसी आमे डिस्कशन करूछु किंबा आमे जानिछु. तो स्मॉलर प्लैनेट भी सोलर सिस्टम भीतर थिबो. कॉमेट से भी आमे जस्ट डिस्कस करलु. जदि स्मॉलर प्लैनेट्स अछंती तो प्लैनेट्स भी थिबे. बाकी रहि गला हमर नेबुला. सो व्हाट इज अ नेबुला? फर्स्ट तो हमर एई तीनटा रु क्लियर हे जाउची कि नेबुला इज द आंसर, राइट? सिंपल एलिमिनेशन मेथड, राइट? बट वी नीड टू आल्सो इक्वली अंडरस्टैंड व्हाट इज नेबुला. Nebula is basically composition of two gases, helium and hydrogen, and they occur at primary stages when the galaxies are formed, right? This is dense cloud gases. आपनको एमती statement based question भी मिले पारे, like what is nebula, माने composition of nebula, some facts related to nebula, statement 1, statement 2. So be very clear with that. Main question number 5 आपनको बहुत ही easy question दिखा जा पाए लागी पारे, but using this information it can be made a very difficult question, a tricky question. So these explanation parts have to be read very clearly. Which of the following planets do not have a satellite? First thing, I have highlighted the not here. Mars and Venus, Mercury and Venus, Mars and Mercury, Neptune and Pluto, right? So friends, the answer is Mercury and Venus. Mercury, basically we know that Mercury has a weaker gravitational force, smaller in size, closest to the sun, whereas Venus is a powerful planet, but it's unfortunate that Venus has a great gravitational pull but still does not have a moon. So this is a special feature of Mercury and Venus. So once you are making notes, please add this also in your notes, right? Mercury and Venus. Because exam रे आपन को every time strike होबो कि Mercury sun र पाखरे अछि, smaller अछि, तो maybe तारो satellite न थाई पारे. But Venus केस रे
ଆପଣ confuse ହେଇପାରନ୍ତି तो please write it and enrich your notes. The distance between earth and the sun is maximum on, this is the concept of जोटा ଆମେ discuss करथिलु aphelion and perihelion. देखंतु एबे सेटा ଆମେ elliptical path रे discuss करथिलु, एबे similar जिंस को ଆମେ month date हिसाब रे approach करिवु. Let's start the discussion. देखंतु ଆମେ जानिचु कि sun रो earth रो गोटे elliptical path अछि, this is our sun, so it never will be constant, same equal equi type रो हबनी, different हबो because केतळे पाखरे थिबो केतळे दूरे थिबो, continuously increase ही जाउथिबो distance, phone decrease ही जाउथिबो distance. So as the earth follows an elliptical path around its distance from the sun never remains the constant, right? It is nearest to the sun at 3rd January, perihelion P pakhare, and farthest from the sun on July 4th, aphelion A apart, right? P is pakhare and A is away, apart in that sense, right? Moving on to the next. This is the easiest question of today's discussion. What is total number of planets around the sun? Please remember it is always 8. And ame Pluto को केबे बाहर करथिलु? That is your like add equally add it in your notes. Planets of the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, right? But please add here Pluto was removed in the year 2006 and August 24. Just remember 2006, August 24 is up to you. If you can remember, it's amazing. Which of the following is the largest planet? Which of the following each Attavittru is the largest? Jupiter, Venus, Saturn, Uranus. We all know Jupiter is usually the largest planet, so nothing much to explain here. Right? Diameter is this much, stands largest planet of the solar system. Its mass is about 2.5 times of the planet of the solar system combined. Right? 10. The four largest planets of the solar system in descending order are. These questions are the favorite type of questions that are being asked now. First thing is to highlight descending, then proceed to the question. Dekhundu Jupiter, Mercury, Saturn, Uranus. Jupiter is the largest, Mercury is the smallest, so this is not going in our way. Our approach of elimination. Mercury pare Jupiter asibani. This is also again wrong. Jupiter and Saturn, this looks maybe a probable answer. Uranus, Neptune, Jupiter pare Mercury, this also cannot happen because majire auri planets achanti. So by eliminating these three, we come to the option number 3, right? According to the size of the planet, descending will be Jupiter is the largest, Saturn is the second largest, Uranus is the third, and Neptune is the fourth largest. This is our approach based on knowledge. It can also be equally be done correctly with the help of proper elimination methods. Number of satellites of Mercury is, we have already discussed, it is 0. It is very close to the sun. Sun ro bahut pakhare Mercury achi, Mercury size small achi, enough gravitational power nahi but the satellite ko draw kariki rakhiba pai. The planet is nearest to sun, no satellite and other things, right? Friends, just question number 3 re ame discuss karthilu. Which of the scientists had proven every planet has an elongated path? Here the word is elongated. Just in question number 3 we use the word elliptical path, right? What is the difference between elongated and elliptical path? It is the same thing, that it is not a circular path, it is an advanced version of the path, that is elliptical, and the answer is Kepler. We have discussed the question. Just question number 12 put kare reason hai, the elongated equally means elliptical path. Kepler, through his planetary law of motion, this word is important, proved that every planet has an elongated path. How many days in 1 year on Mercury? 1 year Mercury. Highlight done. Question being there. Being the nearest planet to sun, its path around sun is smallest. Why? Because pakhare achi, diameter kam achi, circumference kam. Hence it is 1 year equals to 88 days. 59 days spent on Earth are equivalent to 1 day on Mercury, as the days are bigger than the days on the Earth. So this is a statement important that you should remember. Like statement based jodi as jauchi, unfortunately. Dekhundu 59 days spent on Earth. 59 days spent on Earth is equivalent to 1 day spent in Mercury. Earth रे 60 दिन माने almost 59 days spent कला time होची equal to 1 day in Mercury. The reason कौन? Mercury's days are bigger than days on the Earth.
ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ difficult ଲାଗୁଛି believe କରିବା ପାଇଁ. So these facts could be used to trick students in the exam, right? Remember it in detail so that we do not lose marks getting surprised in the hall. One astronomical unit, this is also an important basic fundamental question that is being asked repeatedly, is the average distance between which of the following? Astronomical unit, आमे यार solution तो आमे समझते probably जानिचु, earth and the sun. So why this is being used? Because suppose this is sun, this is earth, ए यूनिट को रिलेटिवली बेस करिकी आमे कैलकुलेट करथाउ जे हमर नियरेस्ट स्टार किबा सन छडाओ जो भी स्टार्स अछंती आमे तांकोटु केते एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स रो डिस्टेंस रे अछंतु. One is astronomical unit and the other one is light years, right? We will discuss both of this in this PDF itself. One astronomical unit is the distance in the space. It is almost equivalent to this kilometer. This may not be a question in the exam, but आमे जदि जानिथिबा कि एटा केमति कैलकुलेट करंती तो आमे एटा प्रोबेबली गेस करिकि करि परिबा. Distance between earth and sun is considered as one distance. One astronomical unit of the heavenly bodies are measured with respect to this. This is earth, this is sun. So earth और sun भितर जो distance अछि ताकू आमे 1 unit consider करू, and सेही 1 unit relatively use करिकि आमे बाकी जहा भी जिंसर distance आमे कैलकुलेट करचू जो अदर कैलकुलेशंस होची स्पेस कैलकुलेशंस आमे सेही हिसाब रे सेटा फॉलो करचू. सिमिलरली लाइट ईयर होची गोटे ईयर रे लाइट जेति की स्पीड जाई परिबो, that part is known as light year. Light year सुनी कि हमको लागुची कोन है? This is a unit of time, but no, this is a unit of distance. Year सुनी कि confuse हेबेनी. Light year, light जार velocity होची 3 into 10 to the power 8 meter per second. यदि ए स्पीड रे लाइट 1 year पे ट्रैवल करची, then जितकी डिस्टेंस हो that is known as light year, right? Question number 15, which is the brightest planet of the solar system? Remember friends, Mercury बहुत पाखे रे अछि, आपन को लागि पारे जे Mercury थिबो brightest, but this is wrong. Answer is Venus. Venus is the brightest planet of the solar system. Venus हमको night sky रे भी बहुत किसी एमती occasions अछि जोटी हमें Venus को brightly night sky रे देखि परिबा, right? Venus को हमें कहि थाउ morning star and evening star. This is an important thing. Please update it in your notes. Along with that, it is also known as Earth's twin. Being closer to Earth, Venus appears to be the brightest. It is the hottest planet of the solar system due to the presence of excessive CO2. CO2, as we all know, CO2 is a heat trapping gas, जहाँ को हमें global warming gas कहता हूँ, greenhouse gas कहता हूँ. CO2 अर्थ रे इतने की minimum amount रे 0.001% increase है कि भी massive temperature climate change कर दूची. तो भावंतु तार atmosphere excessive CO2 अच्छी. So it is expected that more and more. Suppose this is Venus. Venus रे atmosphere. Venus atmosphere जब heat enter कला. Heat enter कला परे CO2 सेटा को absorb कला परे यार temperature बढ़ जिवो. So every time this heat is not getting out, we have ozone and other things. जब एटा को बाहर कर दोचंती, heat attract हेले full temperature बढ़ियो. So एमती continuously temperature rise रे थाए. So that is why it is the hottest planet, right? It is also known as morning and evening star. Which planet shows phases like the moon? Venus and Mercury have orbits that are smaller than Earth's, right? Both exhibit phases like moon due to changing shape of shadowed region. Galileo was the first person to notice this phenomena through his telescope. Basically friends, जो moon type रो characteristic देखिए show करिया पाई, reflect करिया पाई, गोटे planet को छोटा जो path दरकार, जो तरह से movement करते हैं, size भी छोटा होइतिबा दरकार, so that relate जो जिनसो गुड़ा similar अछंती ना each other से तो chances अच्छी कि से माने similar characteristics show करिवे. Jupiter is never an option because it is massively large. Pluto is never an option because it एते दूर रे अछि, तो तारा path बहुत बड़ा ही जाउची. We have two things, one is Venus, one is Mars. Again, Mars is also considerably larger in size than satellites, so we are left with Venus, right? But also remember Mercury here. After Sun, which is the closest star to the Earth, right?
Vega, Cirrus, Proxima Centauri, Alpha Centauri. Friends, 17 number question आपको easy लगुथिबो. Maybe it is easy for all of you, but please remember speciality of all these four stars. को type of stars, को जिनसो ପାଇଁ एमाने best examples. Do not just read question number 17 and feel this is an easy question. Proxima Centauri, everybody knows that. But what is the speciality of Alpha Centauri? What is the speciality of Sirius? What is the speciality of Vega? अपन जदि notes रे टिके टिके लेखिके enrich कर परिबे, that then definitely our success rate आउरी increase होगा, right? Question number 18. The outermost layer of the sun is known as corona. आपण गोटे ना शुणिथिबे coronal discharge and other things. Outermost layer of sun is known as corona. It is visible only during solar eclipses as plumes of burning gases from sides of the moon are seen when total solar eclipse occurs. अच्छा, नेक्स्ट क्लास रे फ्रेंड्स हमें एक्लिप्स विषय रे बहुत सारा जिंस डिस्कस करिवा. तो आपण एक्लिप्स रो कांसेप्ट एंड एक्लिप्स रो जो कंडीशंस थाए, प्लीज गो इन डिटेल विथ दैट. अलोंग विथ इट हमें डिस्कशन करिवा इक्विनॉक्स, सोल्स्टाइस एंड विथ इक्वल एम्फेसिस टू कांसेप्ट, इक्वल एम्फेसिस टू डेटा, फैक्ट एंड डेट्स, राइट? So please next lecture रे आपण सेटा कंप्लीट. फ्रेंड्स देखंतु, every time there is the word nuclear, we have two parts. One is fission and one is fusion. Fusion, fuse दीटा जिंस मिसिकी गोटे लार्जर एटम होचन. देखंतु, in fission reaction गोटे heavy nucleus breaks down into two or more parts, whereas in fusion smaller nucleus combine to form bigger nucleus releasing tremendous new. This is fusion. फ्यूज हो जाउछंती, each other से तो मिसी जाउछंती. फिजन माने पार्ट्स रे डिवाइड हो जाउछंती, राइट? दिस इज मींस डिवाइडेड into parts, whereas fusion is disintegration. Sorry, fusion is integration. इंटीग्रेट है कि एनर्जी प्रोड्यूस करछंती, फ्यूजन इज डिसइंटीग्रेशन. तो एवरी टाइम व्हेन इट इज सन, प्लीज रिमेंबर सन रे होता है न्यूक्लियर फिशन. कंफ्यूजन ही पारे, सॉरी, न्यूक्लियर फ्यूजन कंफ्यूजन ही पारे, बट ऑलवेज रिमेंबर सन इज अ लार्जर प्लैनेट एंड लार्जर प्लैनेट रे जिंसो डिसइंटीग्रेट न होय कि इंटीग्रेट होचंती. गेटिंग द पॉइंट? This part, the second part, fusion reactions when smaller nuclei combine to form bigger nucleus releasing tremendous energy, right? Fusion is not the answer, please do not get confused. Then the next question is, how old is earth? It is decided by which of the following process? हमें calculate करते हो ना, earth is this billion years ago, किंबा आपण सुनिथिबे जे 200 million years ago continental drift theory कहूची कि ए प्लैनेट, सॉरी, ए प्लेट मूव कला, एटा हैला सेटा हैला जहां भी. तो आमे अर्थ रो एज केमती कैलकुलेट करछु, आमे जानछु केमती कि सब जिंस एति कि मिलियन इयर्स अगो होइतला. सो द आंसर इज radioactive dating method. Process or the concept behind it is that to calculate the age of the rocks or carbon fossil, this method is used as every substance contains certain amount of radioactive carbon which depletes with time. तो गोटे substance रो original radioactive carbon जोटा अछि सेटा with time decay होची, disintegrate होची. तो तार disintegration टा हमको time कहूची जे गोटे सीमित समय रे सेटा एतिकी amount रो disintegrate हबो. Again for next disintegration it will take this many 100,000 years. So this is the answer to this. फ्रेंड्स, या परे हमर मोर इंपोर्टेंट आउरी 20 टा क्वेश्चंस अछि. ए 20 टा क्वेश्चंस आपन को टेलीग्राम ग्रुप रे मिल जिवो. आज रो क्वेश्चन रो सब कांसेप्ट को हम ऐप रे कंप्लीटली डिस्क्राइब करछु, हमें क्लियरली क्लासेस होची एंड आपन जॉइन करि परिबे आसान एकेडमी. हमर लेटेस्ट अपडेटेड लेक्चर्स पेंगी, लेटेस्ट अपडेटेड जो हमर मटेरियल्स अछि, YouTube कंटेंट अछि जो हमें फ्री सीरीज में होची लेक्चर्स रो. एंड हमें होप करिबु कि आपण मन को पढ़ा पढ़ी बहुत भल रे चलथिबो. प्लीज कमेंट इन द सेक्शंस what other part you need as a upcoming videos. Keep studying, keep making us proud, keep making your parents proud, keep making the nation proud. Lots of best wishes students.
Keep up the good work and let's hope for the very best results for all of us. Thank you so much, students. Let's meet very soon with the next part of this lecture and discuss some of the important concepts. Thank you so much.